Hey everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss JavaScript classes, basic syntax, and explore its properties like getters, setters, and do a small project, not project, I guess, a small program to understand the concept of classes. You know what is classes? Let's start with basic syntax. There is a code I found in Wikipedia that is written in object-oriented programming. A class is extensible programming code template for creating objects, providing initial value for a state, member variables, and implementation of behavior, member function, or methods. So, did you understand anything from these lines? So, let me tell you. For example, the classes are nothing, it's just a blueprint of a substance or a thing. इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कार होती है हमारे पास, तो हमारे पास बहुत सारी कारें हैं, तो उनका एक ब्लूप्रिंट अगर हम डिसाइड करें क्या होगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि टोयोटा की कार है, फरारी है, मर्सिडीज है, तो इन सब के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं. जैसे कि फरारी के अंदर एग्जॉस्ट अच्छा होता है, सीटिंग होती है, तो एक ब्लूप्रिंट क्या होगा. टोयोटा के अंदर भी कार टायर्स होते हैं, सीट होती है, ड्राइविंग व्हील होती है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, तो ये जो कॉमन चीज़ होती है, तो इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा. तो ब्लूप्रिंट के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक कार है, उसकी बॉडी होगी, उसके पास टायर होंगे, उसके पास ब्रेक होंगे, एक्सीलेटर होंगे. तो ये जो बेसिक मेथड्स हैं या फिर जो इंस्टांस है, जो थिंग्स है, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं. जैसे कि अगर एक घर बनाते तो एक घर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, लैंड, तो ये एक ब्लूप्रिंट हो गया. तो जो ब्लूप्रिंट है वही होता है हमारे क्लासेस. तो हमने ऑब्जेक्ट्स, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट में आते हैं तो तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं. लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू ए const let कर लेते हैं, let a is equal to and then curly braces and we type the JSON format the data that is object. But the classes is similar, but when we classes it's a blueprint and we create objects of a classes, so we can create multiple objects of a classes. So what does it helps and why we use classes? So let me tell you. Classic is just nothing that we have a, you want to use log in a user and we have a multiple user, like for example let's take 100 user we want to log in. So for 100 user you are going to create 100 objects for the creating the data values like names, age, gmail id, mobile numbers, and that's stupid now. So you create a blueprint for this login system which is called class, and we create an object when the user comes, the it sees the classes that in a API or in a format, and on a web page it sees the fill in your email, name, mobile numbers, and he will, that is the classic basic blueprint. And when the user click on login or sign up, the new object create an instance of the class is stored in an object. So the classes does not take memory space in a program, the object takes memory in a program. Okay, so I hope you got this. Let's explore to understand more. So the basic syntax of a class, here we can see in an example that class, my class, and it has a constructor where we can pass the values, variables, and it also include method. Method is nothing just like its functions. So okay, though there are various ways you can create the object of a class using the new keyword or a constructor method. So first let's see the example using the new keyword. Here is we have a class name user which having a constructor name, and we are defining the name variable to the particular class, the instance. So this dot name is equal to name, and we are having a method say hi which is going to alert this dot name. So let user is equal to new user Johan, we will provide the argument, and we use the user dot say hi method, and we click on run, so we can see the alert notification we got the John. Okay, so now there you know that the classes we can create object of a classes using the new keyword or a constructor. So then okay, so what is classes? So अभी जैसे मैंने जितना बताया तुम्हें क्लासेस के लिए ब्लूप्रिंट वगैरह. सो एक और चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर. क्लासेस में कोई नई चीज़ नहीं है. अगर तुमने फंक्शन यूज़ करा है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्लासेस आर जस्ट लाइक अ फंक्शंस. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. Where this, okay, see this example, it's saying that function user which having the argument name, and we are defining this dot name, and you are a function constructor property by default. एक function के अंदर property होती है as a constructor by default. अगर तुम्हें नहीं पता तो ये तुम MDN की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो. एक constructor of a functions ये by default होता है, ये जो हमसे hidden होता है. ठीक है, तो यूजर डॉट प्रॉपर्टी डॉट से हाई इज इक्वल टू फंक्शन, दिस इज द प्रोग्राम, एंड अलर्ट दिस डॉट नेम. ठीक है, तो हम लेट यूजर का एक न्यू क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यूजर डॉट से हाई. सो दिस इज सेम एज दिस अबव वी see the user dot say name. So what's the difference? Nothing. There is a difference between classes and function, but it's not a new thing in a programming that classes are different, the functions are different, they have their own use cases. So you have to find when to use the classes or when to use a function depending on your program or your applications. So there is a saying that the classes is that's a syntactic sugar. I don't know what we call, yeah, not just a syntactic sugar. People say that classes is a syntactic sugar, but we could actually declare the same thing without using the class keyword. But there is a difference between classes and a function. So पहला difference देखते हैं, what is the difference between the classes and a function. So first is the function created by a class is labeled as a special internal property which is known as is class constructor. As you put out, the function has by default constructor and it is hidden in a function. So it is not entirely the same as creating it manually, but in classes we create the constructor by ourselves, we do it manually. Okay, the language checks for a new property in a variety of places. Okay, unlike a regular function it must call with a new function, but and we can use the function as we can access the function without using the new keyword, but in classes we have to use the new functions. Okay, also the second difference between the class and a function is that class methods are non-enumerable. What do you mean by non-enumerable? Okay, so
इनहेरिटेबल क्या होता है कि किसी चीज को आइटरेट करना। फॉर लूप के बारे में तुम्हें पता है, फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट करता है। तो वही होते हैं जो क्लास के मेथड्स होते हैं ना, उसके ऊपर तुम लूप यूज नहीं कर सकते। तो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो वो इनहेरिटेबल नहीं होता, उसकी फॉल्स होती है बाय डिफॉल्ट, और उसको तुम चेंज कर सकते हो बट बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिटेबल नहीं होती है। इसलिए वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते। बट फंक्शंस के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो गए तो तुम उसको इन्यूमरेट कर सकते हो, उनके ऊपर लूप लगा सकते हो, उनके ऊपर काम कर सकते हो। थर्ड डिफरेंस क्या होता है, क्लासेस जो होती है ना हमेशा यूज स्ट्रिक्ट करती हैं। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट पता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक यूज स्ट्रिक्ट करके एक फंक्शन होता है जो यूज किया जाता है इन एनी डिफरेंस। तो यूज स्ट्रिक्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। Okay, now let's talk about class expressions. So just like function, class can be defined inside another expression, pass around and return, assign, etc. एक एग्जांपल ले रखा हमने, let user is equal to class, से हमने like we are going to use class user then curly braces and we are declaring the constructor method variable, but we can use also use let keywords to identify a class. Okay, there is nothing new and we can access here. In example you can see that they created the class using the let keyword and access the class without using the new keyword. Okay, so this is not new. Okay, sorry, without, so I mistake, but they are accessing the class without using the new keyword, so we are getting the error. Why? Because class name is not visible outside of the class. Okay, now let's talk about getter and setters. So just like literals objects, classes may include getters, setters, computed properties, etc. ओके, सो गेटर और सेटर्स जो होते हैं ना जस्ट लाइक लिटर्स ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। जैसे यूजर डॉट नेम होता है तो गेट द वैल्यू फ्रॉम द गेट द यूजर, सेट द वैल्यू ऑफ अ यूजर, सो वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल्स, वी यूज गेटर और सेटर्स। सो क्लासेस के भी अपने आप गेटर्स और सेटर्स होते हैं। So let's say in the code we have a class user with a constructor name and this dot name, we are having a getter name which returns this dot name and we are setting the name value, and in this program we are saying if the value of name value dot length is less than 4, the alert name is short and return, else the name will be print. But in this you can say the John is less than 4 and we are going to output the name is short. Let's run the program. See, John and the name is too short. Okay, now compounding names, like where you see the method name we use. What is compounded name? It's nothing, just adding the two values to make a one names. Like the method was in this program where this method name was say hi, so we can use compounded names just like this. Class user in the array using brackets, you have to use a array brackets or square brackets, and in this square bracket in single quotation you the first name, then plus, then the second name, then we describe the method. So see, after declaring it less like that, and you can access the new user dot say hi by compounded. So it's just nothing but you can just change the name of a method by concatenating two variables or two words. Okay, so what is, now let's come to class fields. Class fields, so previously our classes has only methods, but in class field syntax that allow to add properties. For instance, let's add name property to class user. So एक class user है, उसकी जो name की value हमने John दे रखी है, उसके अंदर एक method है say hi जो alert करता है this dot name को। तो ये कर पाएगा? सोचो अगर यहाँ पर new user dot say hi करा है तो हम इसको रन करते हैं तो क्या आया, hello John, रन कर गया। लेकिन यहाँ पे तो हमने कंस्ट्रक्टर का यूज ही नहीं करा और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं करा। सो व्हाई दिस वर्क्स बट व्हाई दिस नॉट वर्क देयर? Let me tell you. So what is here, it's the class fields, and what we are using are the class. Okay, there is a difference between class and class fields. So we just write equal operator in a declaration and that's it to use the variable. The important difference of a class field is that the set are individual objects, not user.prototype. What do you mean by user.prototype and individual objects? For the name dot is equal to John, that is belongs to the particular class, not by the another object. For example, that you are using user is not a blueprint, but the only user it's inside the class, it can be used. But if we create the object or instance of the class, that cannot use the name variable because it's not declared in a constructor. So that is the difference between the class fields and the normal class constructor. Okay, now the next topic, making bound method with class fields. सो डेमोस्ट्रेट करते हैं, एक फंक्शन बाइंडिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डायनामिक होती है दिस के लिए, डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉल। अगर तुमने कॉल स्टैक पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एग्जीक्यूशन स्टेट होती है, इवेंट लूप, मेन लूप, तो वो कैसे काम करती है तो उसकी एक वीडियो देख लेना। तो सो उसमें वैसे ही होता है, फंक्शन बाइंडिंग भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है मेथड है, इसमें पास होता है अराउंड और जो कॉल करता है अनदर कॉन्स्ट्रक्ट को। तो यहाँ पे जो दिस होता है ना, रेफरेंस करता है टू इट्स ऑब्जेक्ट एनी मोर। ओके, वांट टू बी रेफरेंस टू इट्स ऑब्जेक्ट एनीमोर, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं कर पाता है। इस चीज़ के लिए हम बाउंडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास है हमारे पास बटन, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है जिसकी हमने वैल्यू क्लास के लिए सेट करी है, एक मेथड है क्लिक, यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, अलर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास बटन का और यहाँ पे एक सेट टाइम फंक्शन को यूज करा जहाँ पे क्लिक होगा 1 सेकंड बाद। सो वी रन द प्रोग्राम, सो आफ्टर 1 सेकंड यू कैन सी अनडिफाइंड। ओके, so why this undefined in the program? Because this can't access, this don't have the reference to its object anymore. So that's what I'm talking about, the constructor. We declare a variable in a constructor or using the class field using the equal operator. In this example here you can see that. Okay, so this won't have the reference to its object, that's why we use
constructor. But if you want to the particular variable or a particular data to be accessed with the class, then you can use the class fields equal operator to set the values. Okay, so इस problem को क्या कहते हैं, losing this. The problem is called losing this. This is the problem. There are two approaches to fix this problem in function binding. I will discuss the function binding in next video. ओके, सो फर्स्ट क्या होता है, पास रेफर फंक्शन होता है जिसमें हम सेट डाउन डॉट बटन डॉट क्लिक डॉट 1 सेकंड लेटर एक रेफर फंक्शन होता है, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, और क्या होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, फिर बिल्ड द मेथड टू ऑब्जेक्ट एग्जांपल इन द कंस्ट्रक्टर. तो एक एग्जांपल है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने इस सेट टाइम बटन का यूज़ किया है, बट यहाँ पे भी किया था, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आया है और यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आया. जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हेलो आया. सो कैन यू टेल द व्हाट वी यूज हियर दैट द प्रोग्राम रन बट इट डज नॉट वर्क हियर. Let's think. So let me tell you. So the class field on click is created on per year object basis. There is a separate function for each button object. With this inside it refreshing that object, we can pass button dot click around anywhere, and this value of this will always be correct. That's especially useful in browser environment for the event listener. Okay, I hope you got the point. So let me simplify for this. So what is saying that here is the class button constructor value, and this dot value is equal to value, and we are having a method click and alerting this value, and we are creating the object of the class, and set time out button dot click after 1 second we are calling the function method, but it's saying undefined. But in this program what we are having here is a class button and constructor this value, and we having a click. What is doing this click? This click is having a callback function to this method. So what is click? Click is created on peer object basis. What is peer object basis? This is entire separate function for each button. What is meant by create an entire separate function for each button? What is happening in this program that we are having click with some method, but it's not a callback. So when it's callback, it's creating the reference of this data. Okay, and the reference of that data is called every time when you're having a callback in a function, so the program does not lose its value. Okay, so when you click, the function get triggered and the function calls this, but the value of this dot value is stored in a click, so in a class. So that's how we got this what class field click button with a callback. Okay, so यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्लासेस और क्या होती है. तो यहाँ